हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का सेशन, पहली बात तो वेरी मच काइंड ऑफ यू नो क्वाइट एग्रेसिव प्राइस वाज सिंस लास्ट 2 डेज, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो, एंड नॉट गिविंग अस द एंट्री दैट वी वांटेड, but unfortunately I have taken one trade now and it's going to be, I guess it's going to be loss. I mean, unfortunately it's going to be loss, but I have to talk about it. See, if you follow me from Discord onwards, I posted in Discord as well. Just wait, I didn't open this one. हाँ, बट अगर आप देखो ये स्विंग बुलिश है H4, and there is nothing here that can confirm us that internal pullback has started, swing pullback has started, but some point it will start because अगर आप देखो ये aggressively push up हुआ है, कहीं ना कहीं तो it will start pulling down. ओके, तो बट वी हैव वी मतलब मैंने डेली जो था, मैंने डेली को देखा, ऐसा था डेली लगभग. if you see on daily, there is one lid here above this unmitigated, uh, this one I have to compare it to this one, this unmitigated demand zone, supply zone. Okay, so for me I need to see this, at least minimum is to sweep this one, but unfortunately it not happen and it's going downside. बट वॉट आई हैव, मतलब मैंने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आई हैव फिगर्ड आउट दैट सम टाइम क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि दैट इट विल रिवर्स, बट इट नॉट, and it follow the order flow of current order flow most of the time. We think that it reverses, but it unfortunately it did not. And so अगर हम देखें यहाँ पे, I have taken an entry, but it was Asian sweep entry. I have taken it. Just a second, I will show you what I have taken it. हाँ, अगर आप यहाँ पर देखें ओवरऑल सिनेरियो आफ्टर दिस, मैंने इसे इसे स्विंग स्ट्रक्चर इसलिए बोला, मैंने डिस्कॉर्ड में मेंशन किया था. आई जस्ट शो यू, जस्ट अ वेट. हाँ, इसे मैंने स्विंग स्ट्रक्चर इसलिए कंसिडर किया क्योंकि इतना ज़बरदस्त पुल बैक आया है मार्केट में, मतलब एक सडन मूवमेंट टू द अपसाइड आया है. तो देर इज़, मतलब फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोग के लिए टू फिगर इट आउट कि ये इंटरनल है या स्विंग है या फिर स्मॉल इंटरनल है. तो मैंने उसे ईजी करने के लिए इसे मैंने अपना स्विंग पकड़ा. उसके बाद एवरीथिंग दैट आई कंसिडर दिस एज माई इंटरनल पुल बैक. So for looking short entry, I need to see this to be goes. So now finally after sweeping this Asia low, it just did what? It did manage to break this low. Okay, but it did manage to break this low. So now this become a strong one, strong internal one. Okay, and there is no, I am saying there is nothing here that can fuel the moment to the downside because everything here is mitigated. अगर आप देखो everything is here is mitigated, but still I am taking a M1 entry during London low session. I know it is low probability, that's why I have taken a 0.5% entry only, 0.5% risk. I have taken this one because more often than not, when the price come to the higher probability area, I go towards on for 1%. When I am not that much confident, I go, मतलब मैं फिर उस वक्त ना अपना रिस्क को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, छोटा, मतलब एटलीस्ट हाफ कट कर देता हूँ. तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री ली है आफ्टर दिस इम्बैलेंस फेल. आई हैव टेकन एंट्री बिकॉज क्या हुआ यहाँ पे, एशिया स्वीप होने के बाद मार्केट एग्रेसिवली अपसाइड गया एंड देन इट कम टू माई सीई एंट्री which is called Asian sweep model. And when inside the Asian sweep, I need more confirmation. So I waited for this imbalance to be failed. So for after this candle, if you observe clearly here, after this candle pushing higher and then it reverses back, then there is my entry that I taken it. Okay, so this is, for me it is Asia high,
Asia low, I have taken it, so I need to see this to be taken out. But what happened exactly after some time, entry के बाद क्या हुआ? What happened after enter? If you see what price just did around 4:45 p.m., it just break below this one. So this is, for me, it is internal, but it is created during the एशिया सेशन. अगर आप एग्जैक्टली देखोगे, इसका टाइमिंग अगर आप कंफर्म करोगे, इट्स ड्यूरिंग लंदन सेशन, मतलब ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया सेशन. सो ये लो प्रोबेबिलिटी ही बन जाता है अल्टीमेटली. बट ये स्वीप करने के बाद देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गो अप. फॉर मी ऑन अ daily candle, I need to see this to be taken out. So that's why I have with confident I am taking this trade. But somehow, as you can see, price very aggressively go to the upside and it can start pulling back. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नर्वस था to take an entry. Okay, but see that I have taken an entry, price just go very quickly and then suddenly it's just dropped. Okay, for now I'm still in the trade, but the risk is half, so I'm not in the fear. I need uh, either it's go this one or that one, I just don't care. So इतना तो है कि प्राइस अगर रिवर्स होना है तो इट विल रिवर्स बिलो दिस. इफ इट ब्रेक दिस एंड दिस, दैट मीन्स इट डेफिनेटली गोइंग टू ब्रेक दैट दैट एंड दिस. सो आई एम जस्ट वेटिंग, बिकॉज क्या है, देर इज़ अ न्यूज़ अराउंड 6:45 p.m. अगर if you follow me on Discord as well, I posted, in just a second, I have to put this inside. And if I posted on Euro USD, I guess. हाँ, too many news on EU today, so be more patient with the setup that you choose. But मैंने क्या किया, I have taken the high probability to medium probability setup, but I have cut down my risk. My risk was around just 0.5. That means $500 risk I'm taking per trade now. एंड व्हाट आर द न्यूज़ेस दैट आर कमिंग. हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो, ये मेरा नोशन का डैशबोर्ड है जहाँ मैं ईच एंड एवरीथिंग करता हूँ, मतलब एवरीडे मॉर्निंग में. पहले ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आई पोस्टेड ऑन माई डिस्कॉर्ड. ओके, तो यूरो में मेन रिफाइन क्या फाइनेंसिंग रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आएंगे, तो ये हाई इम्पैक्ट है अकॉर्डिंग टू यूरो. फिर उसके बाद ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट वो कब होता है, जब ये 6:45 पीएम को जो भी वो रेट्स अनाउंसमेंट होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें होती हैं. तो दैट मीन्स 6:30 से लेके 7:30 तक टेक इन एंट्री इज़ बैड. बिकॉज क्या है, 6:45 को एंट्री है, नेक्स्ट 15 मिनट में कोई एंट्री लूँगा नहीं जब तक वो जो न्यूज़ का केओस है वो ख़त्म नहीं होता है. ओके, तो वो केओस ख़त्म होते होते 7 हो जाएगा. फिर 7 को यूएसडी पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि एफओएमसी एनएफपी टुमारो है. बट उसके ऊपर जो क्लेम रिलेटेड इश्यूज है वो सारे आज डिस्क्लोज होंगे. एक सेकेंड. हाँ, देख लीजिए. सॉरी सॉरी, अगेन अगेन आई एम कमिंग बैक. ऐसा होता रहता है मेरे साथ. घर पे तो एटलीस्ट होता है. तो मैं मेन रिफाइन ये है, रेट एम्प्लॉयमेंट क्लेम है 7 पीएम को. फिर उसके 15 मिनट तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, जस्ट बिकॉज जब तक वो न्यूज़ का कियोस नहीं खत्म होता है. फिर जैसे न्यूज़ का कियोस खत्म होगा 7:15 को फिर से ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है. आई नो इट्स नॉट दैट हाई इम्पैक्ट लाइक 6:45 पीएम, बट it is kind of, can do some volatility during that particular time. So I will wait for 7:15 to 7:30 to settle down everything. Then 7:30 I can take an entry. Suppose I'm right now I'm in the trade. If suppose this failed, okay, suppose this will fail, बिकॉज क्या है, मैं 6:30 को एग्जैक्टली अराउंड 6:30, इफ प्राइस वॉज हियर और देयर और समवेयर एल्स एनीवेयर, आई डोंट केयर अबाउट इट. इफ प्राइस वॉज हियर और समवेयर हियर ड्यूरिंग माई स्टॉप लॉस, आई विल क्लोज 6:30, आई विल क्लोज होल ट्रेड. ओके, आई विल नॉट वेट फॉर दैट. उसके बाद में डायरेक्टली इफ आई एम गोइंग टू बी एंटर इन एनी ट्रेड, आई विल टेक एन एंट्री अराउंड 7:30 पी एम आफ्टर ओनली. सो आई एम जस्ट गोइंग टू वेट. सो ये मेरा सुबह का एनालिसिस था और मैंने ये पोस्ट किया था. देर इज़ अ न्यूज़, सो मेनी न्यूज़. ओके, सो मैंने ये पोस्ट किया. उसके बाद स्विंग स्विंग स्ट्रैटेजी जो मेरी जीबीपी जेपीवाई की है उसके रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें देखी.
उसके बाद ऑन ईयू टुडे न्यूज सो बी मोर कॉशियस, मुझे रहना है। ऑन जेपी आई हैव ओनली वन H1 POI that I can look to long, that's about it। हाँ, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, I have to talk about it on H1। See, what happen here is that I need to see that price will go up from here as well। बिकॉज क्या होता है, जब भी प्रीमियम एंड डिस्काउंट में जोन में होगा, हमको प्रीमियम से सेल करना है, डिस्काउंट से बाय करना है। तो यहाँ पर ये प्राइस जो था प्रीमियम पे था, मैं फिर भी बाय करना चाह रहा था, जस्ट बिकॉज आई नीड टू सी दिस टू बी टेकन आउट। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव ओनली वन POI लेफ्ट इनसाइड दिस, दैट वन, okay, this one, the H1 POI that left for me to take in an entry, but unfortunately it just dumped and not giving me the entry that I wanted to price to go upside. So I just forget about it, and now the my scenario during New York session is completely different now, because firstly, see, swing structure is bearish, internal is bullish, small internal is bullish. So this will become a target, and we don't know anything about this one. Okay, this is the target, right? So for me to look long, that means price need to come at least minimum to this POI. H4. If the here on H1 or M15 price give me any kind of entry, I will just look to long. Okay, so that is my whole idea during New York session, because क्या है, ये जो भी न्यूज़ आ रही है अभी, whatever the news that going to be come, it's only about EU and the, just a second, it's all the news only about EU and the USD. GBP news already came and go, and but which is medium impact, not impactful in anyway, 3 p.m. that is. So I have to just relax and chill, not doing anything, because कल जो है ना, वो बहुत मतलब कॉशियस डे है, मतलब आई मस्ट से कल हमको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना है, बिकॉज मैंने बहुत बार नोटिस किया, आई माइट नॉट टेक ट्राई टू टेक एन एंट्री, बिकॉज क्या है, कल जो है फ्राइडे है, NFP है, फर्स्ट वीक रहता ही है फर्स्ट वीक के फ्राइडे में। तो ये जो है ना 7 p.m. को, यानी कि दैट मीन्स अगर मुझे लंदन में 3:30 p.m. तक इफ़ आई एम गेटिंग एनी काइंड ऑफ एंट्री ऑन EU, I will take that, but after London Open, after London Low, I will not take an entry on EU till 7:30, or even I don't think so I can take an entry, because 11 p.m. there is a news। So प्रेसिडेंट तो एवरीडे बात ही कर रहे हैं, हाँ? तो आई थिंक अवॉइड करना बेहतर है। बट इफ़ आई हैव वेरी मच कॉन्फिडेंट आई एम इन द ट्रेड that I'm going to take, I might take it, but very fraction of a risk, okay? If I'm going to take a trade during the news, because NFPs might be, I'm figure it out that I can take the entry, so मैं फ्यूचर में सोच सकता हूँ about the NFP। सो कल बहुत कॉशियस डे हो सकता है, आज का इतना नहीं है, बट आई मस्ट से 7:30 तक वी हैव टू वेट। आफ्टर 6:30 के अगर कभी कोई एंट्री में हो, तो जस्ट वेट इट, उसको जाने दो, चलने दो, क्या होता है वॉट एवर इट इज़, जस्ट वेट एंड सी। अगर वो अच्छी तरह से डेवलप होता है, दैट इज़ गुड, इफ़ नॉट, नो प्रॉब्लम। 6:30 तक आई हैव टू बी इन द ट्रेड, और इफ़ नॉट आई जस्ट डिड ब्रेक इवन दैट टाइम। अभी का अगर हम लोग मोटिवेशन कोट मैंने आज जो पोस्ट किया था, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर देयर आर मेनी मिस्टेक, लॉसेस एंड फेलियर्स। ओके, याद रखना, यू डोंट सी। सॉरी, आज मैं घर पे ही हूँ। फ्लेम बॉय, कल ही परसों हम राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे ना, आज ही राहुल गांधी हमारी बिल्डिंग के नीचे आया था। वी जस्ट टॉक अबाउट हिम यस्टरडे सेशन, और एक दिन पहले फ्लेम बॉय से बात कर रहा था मैं। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे पोस्ट की है, और एवरीडे कोशिश करूँगा पोस्ट करने की। इट्स गोइंग टूवर्ड्स अवर डिज़ायर डायरेक्शन यही है। और अगर आप कंफर्म करो डेली में,
तो ये स्वीप है, बिकॉज ये स्वीप हुआ ना डेली में, दैट इज वेरी गुड। डेली POI sweep, which is very good if it happen, but we just don't know about it. We don't know anything about it, okay, unless it happens. उससे पहले we don't have to think about or figure it out anything. Just wait. I'm in the trade currently. My trade around I must say around 0.8. It's not even a 1%, so I will just wait. And I think I have to put some kind of alert here, reversed, so that if the before the news price reverse it, I might go for break even, just like this one. So you know, let's see what's going to happen. I'm just going to wait. Hmm. ये मेरा जर्नल है, शीट है, गूगल शीट। इस पे मैं सारी चीज़ें, सारे ट्रेड्स लेता हूँ। मैंने कल GBP JPY पे आफ्टर लाइव सेशन मुझे ये ट्रेड अराउंड 8:45 PM को मिला। When I reach home, I just open my laptop and see everything. But unfortunately, I have learned from this trade is that do not be hurry to take an entry. Just think twice. Okay. So I have taken this entry and it was, unfortunately, it was loss. I show you. I show you. Just a second. Just a second. I show you the trade. This was the trade that I take. This is my MTF lid that I use for LC1. And just a second. The learning is here. I posted each and everything. Trade was valid. This was the entry that stop order tag me in, then stop loss it. Trade was valid. Time was valid, but the idea was not. सही चीज़ लिखा मैंने, टाइम भी वैलिड था। आई कैन टेक LC M15 एंट्री अराउंड टिल 11:30 PM, ओके। तो हर चीज़ वैलिड थी, ट्रेड भी वैलिड था, टाइम भी वैलिड था, बट द आइडिया वाज नॉट वैलिड। आई मीन हाई प्रोबेबिलिटी इज लॉन्ग, all over direction was long to target the weak internal above which is failed and break the swing weak. Huh? So and reverse. So now the target become weak eternal. If you see the H4 structure will be understand. So this was the phase B long probability trade idea. Probability phase B low probability trade idea. On M15 entry, remember this always go with the flow order flow of H4. Charge is nothing if the direction is wrong. ये मैं हमेशा बोलता हूँ और ये हमेशा मैं अपने आप को इनकरेज करता हूँ कि जो नॉर्मल सा जो अभी देखते हैं, अभी इस पे देखते हैं, आपको समझेगा। मैंने जो बोला ना H4 में आपको समझेगा। दिस इज़ माई H4 जो मैंने समझाया। देखो ये वो ट्रेड था दैट आई वाज वेटिंग मेन टारगेट दिस वन, बट आफ्टर दिस शॉट टू द downside it create a new POI. It's create a new POI, but I have to be more cautious with this type of trade against the order flow. H4 charge is also nothing if not in a good place. Small internal is bullish, so it could be target the number one now because it's failed to break the swing high. मैंने जैसे आपको सेशन से पहले बताया, स्विंग इज बेरिश, इंटरनल इज बुलिश, स्मॉल इंटरनल इज बेरिश एंड स्मॉल इंटरनल इज बुलिश नाउ. So now this become a target. Then how I can be so sure about after this H4 charge that it will go down? It might start coming up from here as well and target this one. So I have taken the loss, but today what happened? Today price just dump. मतलब ज़रूरी नहीं है जो दिन हम लोग सोचेंगे उसी दिन प्राइस हमारा TP और SL हिट करेगा. इट माइट हिट our TP tomorrow. Our idea is right, but the timing was not. ऐसा होता है trades में, okay? And it's reverse aggressively reverses, but what we cannot do about it? Nothing. Mm,
It reverses completely, and what we can do? Nothing about it. We just have to wait because I mean it's just ranging. If you observe, it's ranging, not doing anything much. Okay, so yes, I'm still in the trade, but it's become lower probability now because see the aggressive momentum to the downside. It might start pushing up as well, but we just don't know anything about it. Yes, I'm in the trade right now, but wait. Waiting is the key. Is the key. Okay. GBP, JPY, I need to see price to mitigate this one. So I'm waiting for it. Unfortunately, अगर हम notice करें, it did manage to break this one. Okay. So this become internal high, but there is no POI, I must say. If we go to H1, we might find something, but unfortunately we did not see that. There is nothing. There is very high probability that it will push up like very aggressive. But अब वो न्यूज़ एंड सारी चीज़ें हैं तो then what we can do? Just wait. Trade right now. देखा जाए तो यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर कुछ है नहीं कि जो which can hold the price. Chances है that it will go up.
आई एम जस्ट कमिंग बैक, एक सेकंड में आप। हेलो। सो आई डोंट थिंक कि मुझे अभी सेशन में रहना चाहिए, बार बार मुझे टॉन मारा जा रहा है। जाना है, जाना है, कुछ लाने जाना है। घर पे रहो तो यही होता है। सो जस्ट वेटिंग, नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। ये ट्रेड अगर ये से क्रॉस करता है दैट मीन्स गुड। इसे क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। इसे आई मीन होल होल अगर देखें तो इसे, so वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर प्राइस विच कैन होल्ड अप टू दिस। सो जस्ट वेटिंग, nothing good happening. It's completely reverse, I must. ये बहुत ही गंदा प्राइस एक्शन है जब से सेशन स्टार्ट हुआ है। So, चलो आई थिंक मुझे सेशन बंद करना चाहिए अभी। आज के लिए इतना मेरे लिए बहुत है, घर पे से। ठीक है, नॉट गेटिंग एनीथिंग गुड टुडे।
बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर देखा जाए इंटरनल इज बेरिश नाउ एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी प्रोटेक्टेड, बट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, दैट प्राइस इज जस्ट नॉट गोइंग एनीवेयर, यहाँ ही रेंज कर रहा है। तो इतनी जगह पे है तो क्यों हम गलत एंट्रीज को लें और लॉस करें। जीबीपी जेपीवाई का मैं वेट करूँगा यहाँ पे, एंड देन आई, इफ प्राइस गिव मी माय एंट्री आई विल टेक इट, बट आई विल currently I'm just waiting. But यहाँ तो I just need, you know, patience, just need patience. So now I have to close the session, so we will meet you tomorrow guys. Bye 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 bye. हाँ, थोड़ा जल्दी बंद करते हैं, ठीक है, घर पे हैं इसकी वजह से। So